Now we're going to be dealing with how the country measures the GDP, the gross domestic product, the total value of goods and services produced. So basically, there are three ways to do it. One, what the government can do is it can GDP. So the first one is मुल्क में जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है यू एड दम ऑल अप एवरीथिंग प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री उसकी वैल्यू उसके ऊपर ऐड कर दो प्राइस इनटू क्वांटिटी we will do this in detail in just a bit. The second is add all the expenditures that are being done in the economy by consumers and businesses and government and foreigners, basically whoever is buying the Pakistani good. And lastly, you have the total income ka method. Sari incomes add kar lo. So basically, what they're saying is that the result of all three should be equal. You should get equal values. So if you use any of these methods in Pakistan, you should get a GDP value. ये 2020 का number है. That you should get about in dollar terms 284 billion US dollars की तुम्हारी तीनों मेथड से तुम्हें सेम रिजल्ट ही मिलना चाहिए. सो फर्स्ट मेथड जो टोटल आउटपुट का है, in the most simplistic way you can just add the values by sectors. So we mainly have like three sectors, ठीक है? So when we say by total output, what we're saying is this involves adding up the output produced by the various industries in the economy. So for example, in Pakistan, if you look at the data in terms of the sector wise, it tells us that agriculture, हमारी जो total GDP है, agriculture has about 19%. So agriculture also includes forestry, mining, fishing, basic agriculture. So GDP का 19% in Pakistan is agriculture. It's 18.7. I'm just rounding off the number. फिर second, when we talk about industries, we're talking about the secondary sector. जितनी भी प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को लेके आप उसको कन्वर्ट करते हो into semi-finished and finished goods, that is about 20% of your GDP. So that's also a reasonably large percentage, but the highest percentage goes services. Services constitute to about 61% of your GDP. Or in services के अंदर now you have lots and lots of things. It's not just selling of the good, or you know how like restaurants हो गए, service industry हो गया, hair cutting हो गया, driver हो गया, police हो गई. These are all service industries. You have pest control, cinemas, entertainment, so much stuff. The service industry
is it's quite large. उसमें telecommunication भी आ जाता है, hospitals भी आ जाते हैं, you know, IT, information technology relative चीज़ें हो गई, जितनी retail related है, education हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, प्रोफेशनल सर्विसेज, इस बहुत सारी चीज़ें, इसी वजह से services tends to have the largest percentage in an economy. तो being said that, this is one way. आपने सारे sectors में जाके total कर लिया. But there is one thing that we want to raise a flag over here. When we're going to each of the sector to find out सेक्टर में असल कितनी, नॉट जस्ट परसेंटेज, वैल्यू कितनी जनरेट हुई है. सो आप जाते हो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के पास, माइनिंग की फर्म्स के पास, और आप देखते हो माइनिंग में प्राइस इनटू कितनी क्वांटिटी वर्थ इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है, आप वो जीडीपी पे लिख देते हो. फिशिंग में किस रेट की क्या वैल्यू थी फ़िश की, कितनी क्वांटिटी पकड़ी इन द ईयर, आप उसको टोटल कर लेते हो. मैन्युफैक्चरिंग में आप कितनी गाड़ी बनाई, कितने में बेची, आपने वो टोटल कर लिया. सर्विसेज के अंदर हेयर ड्रेसर से रेस्टोरेंट से लेके हर चीज़ की आपने टोटल एडिशंस कर ली, वैल्यू. द प्रॉब्लम दैट हैपन्स इन दैट मेथड is you have to avoid something called like a double counting. Avoid double counting. So let me give an example as to ये double counting का problem क्या है. So let's suppose you have Nestle, and Nestle का एक ब्रांड है, let's say Fruta Vitals or something like that, and they produce juice. ठीक है, एक जूस बनाने के लिए, it, let's say if it was like a fresh juice, it would have gone through certain stages like what? I'll give them various stage names, let's say 1 2 3 4. Stage number 1 is at the farmer's stage. Okay, basically what a farmer is doing, he already has a tree, and so the input that he has to put is already there, which is the trees and stuff. So really he does not have to incur any costs. However, to produce an output, he has to incur costs like water, fertilizers, उसके पास कोई labor है taking care of stuff and all. तो turns out कि उसने जो एक बॉक्स of juice के अंदर, let's suppose there is one apple that goes inside, और उसके टोटल फार्म के अंदर जब वो वैल्यूएशन निकालता है तो टर्न्स आउट दैट वन एप्पल कॉस्ट्स हिम अबाउट $5, ₹5. Okay, that's the output he's generating. एक एप्पल इज वर्थ 5. ज़ीरो की उसको कोई ख़ास इनकर नहीं करनी पड़ी, बिकॉज he already had the tree, he already had the land, and then season आया तो season के अंदर obviously he had to pay the labor for picking, for taking care of the trees, थोड़ा पानी ये वो खर्चा किया उसने, तो he ended up creating a good worth $5 an apple. That apple was bought by the Nestle. सो नेस्ले ने जब वो ख़रीदा तो ₹5 का ख़रीदा. उसके अंदर नेस्ले ने अब अपने फैक्ट्री और मशीन्स को यूज़ किया और पैकेजिंग वगैरह यूज़ की, एंड एंडेड अप क्रिएटिंग अ बॉक्स ऑफ जूस which costed them, which is valued at, let's say, ₹20 now. ठीक है,
ये 20 रुपीज़ का जूस उसने होल सेलर को सेल किया। होल सेलर ने 20 रुपए का ये जूस खरीदा, अपना ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग वगैरह की उसने कॉस्ट इनकर की और रिटेलर को 25 रुपीज़ में बेच दिया। फाइनली द रिटेलर takes the juice for 25 bucks एंड ऑब्वियसली उसने अपनी शॉप में रखा है, शॉप का रेंट है, फ्रिज बिजली है, लेबर है, इन सब चीज़ों के बाद उसने 30 रुपए का ये बेच दिया। नाउ quite a lengthy process. It probably would have taken a few weeks or months for this to happen. But the thing to see over here is, let's suppose if the government wanted to see कि कितनी वैल्यू का GDP क्रिएट हुआ है, तो दे वेंट टू द प्राइमरी सेक्टर, टू द फार्मर्स एंड दे आस्क्ड देम, हाँ जी कितने का आउटपुट प्रोड्यूस किया? फार्मर ने कहा हमने 5 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया। ओके, दैट्स फाइन, लेट्स रिकॉर्ड इट। उन्होंने जाके इसको GDP में रिकॉर्ड कर लिया। फिर वो सेकेंडरी सेक्टर पे गए और उन नेस्ले से पूछा आपने कितने का जूस प्रोड्यूस किया? उन्होंने कहा हमने 20 रुपए का प्रोड्यूस किया। फिर आप होलसेलर के पास गए, आपने कितनी वैल्यू का काम किया? दे वुड से हमने 25 रुपए का काम किया। एंड फाइनली रिटेलर से पूछा तो रिटेलर ने कहा हमने 30 रुपए का काम किया। सो व्हेन आई ऐड देम ऑल अप, 30, 40, 50, 60, 70, 80 रुपीज़ आ रहा है GDP में, विच वी आर सेइंग इज रॉन्ग। There is a fundamental problem over here, which is कि ये 30 रुपए के अंदर ये 25 रुपीज़ आर ऑलरेडी इंक्लूसिव इन इट। इस 25 रुपए में ये 20 रुपए इज ऑलरेडी इंक्लूसिव इन इट। इस 20 रुपए में ये 5 रुपए इज ऑलरेडी इंक्लूसिव इन इट। ये 5 रुपए इधर भी काउंट हुआ है, इस प्रोसेस में भी काउंट हो रहा है, इस प्रोसेस में भी काउंट हो रहा है और इस प्रोसेस में भी काउंट हो रहा है। ये 5 रुपए जो फार्मर्स ने एप्पल प्रोड्यूस किया 5 रुपए का, वो 4 स्टेजेस के ऊपर, इट्स नॉट डबल काउंटिंग, नॉट ट्रिपल, दिस इज क्वाड्रिपल काउंटिंग, जिससे GDP की वैल्यू बिल्कुल ही ओवर इन्फ्लेटेड है। द डबल काउंटिंग इज अ प्रॉब्लम। तो इसका जो सोल्यूशन है वो वैल्यू एडिशन में है। Value addition. Basically, what the government is going to do, not go to each sector and ask them आपने कितने का output produce किया, but they're going to ask them आपने input जितने का लिया और उसको जो output में convert किया, उसमें आपका काम क्या था? Farmers would say हमने zero value की चीज़ को 5 रुपए का बनाया। If you see what Nestle did, Nestle took 5 rupees की चीज़ और उसको 20 रुपए की वैल्यू का बनाया। They did a value addition of 15. Wholesaler took a thing for 20 rupees and did the value addition of 5, जो उनका obviously transportation cost, थोड़ा सा profit, थोड़ा गार्ड की फीस, थोड़ा सा वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, तो 5 रुपए पर जूस बॉक्स उनका आ गया वैल्यू एडिशन। एंड फाइनली रिटेलर creates a value addition of 5 rupees. Turns out if I add them all together, I get 30 rupees, which is a lot more fair because इसमें मैंने डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम एलिमिनेट कर दिया है। तो statisticians जो हैं, in order to avoid double counting, they do one of the two things. या तो वो सिंपल वैल्यू एडिशंस ले लेते हैं, ओके। सो स्टैटिस्टिशियंस का जो काम है, in order to avoid the double counting,
या तो वो हर सेक्टर के पास जाके वैल्यू एडिशन मेथड यूज़ करके जीडीपी निकालते हैं, या फिर वो बाकी सारे सेक्टर्स को छोड़ के आखिरी सेक्टर जहां पे प्रोडक्ट बिक रहा है वो जाके इंक्लूड कर लेते हैं, यानी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। अगर मैं टोयोटा की प्राइस ले लेता हूँ गाड़ियों की, तो मुझे वो जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग की ग्लास कंपनीज़ हैं, या फिर जो टायर कंपनीज़ हैं, या गियर बॉक्स कंपनीज़ हैं, या जो डेक्स बना रहे हैं गाड़ी के लिए, आई डोंट हैव टू गो टू दैम, बिकॉज फाइनल वैल्यू के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूसिव हो जाएंगी। बट इफ़ आई वॉन्ट टू गो टू एवरी वन, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा, हाँ जी आपने इनपुट्स कितने के खरीदे और वो फिर फाइनल प्रोडक्ट की आउटपुट वैल्यू क्या थी, तो डिफरेंस बता दो आप हमको। तो उसी बेसिस पे वैल्यू एडिशन टैक्स भी लगता है, VAT। वैल्यू एडिशन टैक्स इज that you will not be taxed at the output value that you're producing. You are going to tax on the value additions. Again, for the double counting problem. अगर मैं फार्मर को 5 रुपए के ऊपर टैक्स करता हूं और फिर मैं नेस्ले को 20 रुपए पे टैक्स करता हूं, तो ये 5 रुपए के एप्पल के ऊपर डबल टैक्सेशन हो रही है। होल सेलर पे भी मैं टैक्स लगाता हूँ पूरा 25 रुपए के ऊपर, तो ये 20 रुपए पे पहले भी मैं टैक्स ले चुका हूँ, तो अब मैं 25 के ऊपर तीसरी दफ़ा क्यों टैक्स लूँ उसके ऊपर। सो बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशंस पे टैक्स लूँगा। आप उसके अंदर से अपना सारा जितना भी आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल है आप उसको माइनस कर दोगे, और आपने जो काम किया उसके ऊपर और जो प्रॉफिट वगैरह ले रहे हो, I will tax only that. That's called value addition. The second method that we have is simply the total expenditure. Government will note down everyone's expenditure. Who is doing how much expenditure? So for that, government will need to know how much expenditure is being done by all the consumers, businesses, governments, and export kitna ho raha hai. So total expenditure is you found by adding together the final spending on outputs produced by a country, okay? And for this, basically there are 4 places where I'll look for. एक तो household यानी consumer spending. I'm going to take a look at that. Consumer spending. All spending on goods and services by the people. Second, I will record all investment spending. This is done by the businesses. Businesses spending on the factory premise हो गया, या building हो गया, या machines हो गई, etc. ठीक हो गया? Number 3 is all the government spending on goods and services, okay? Government spending on goods, services, even investment, because sometimes the government is also creating infrastructure and things like that. And lastly, net exports, X minus M. Net export means X minus M. Now, X is Pakistani goods being bought by the foreigners, so you want to include that.
but you subtract the imports because they're not Pakistani goods. So you have to take it out of Pakistan's GDP because it's not a domestic product, it's an international product. Which brings us to our very important equation, which we have talked about earlier also. Aggregate expenditure या aggregate demand या total expenditure या total demand is equals to C plus I plus G plus X minus M. So over here, this is your C, household. Always household basically mean the people of the country. So 212 million people, when they go and spend, that's a big number here. और ये नंबर्स भी आगे जाके मिलियंस के अंदर हैं, तो ये अगर मैं बोलता हूँ 32 मिलियन ये हो रहे हैं, तो मिलियन मिलियन एक्चुअली बिकम्स अ ट्रिलियन. सो वी आर सेइंग ये 32 ट्रिलियन रुपीस इज बीइंग स्पेंट बाय द पीपल. फिर उसके बाद 5 ट्रिलियन इज बीइंग स्पेंट बाय द गवर्नमेंट. फिर ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो दिस इज़ अबाउट लाइक ऑलमोस्ट लाइक 6 ट्रिलियन. जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो 6 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, बिग नंबर अगेन. फिर एक्सपोर्ट में से मैं इंपोर्ट को माइनस करूँगा, ये मेरा नेट आ गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एंड देन आई टोटल देम अप. If you look at my GDP numbers, they are increasing, isn't it? It's keep on going up. ये वजह इसकी राइज होने की क्या है? There could be two possibilities of this rise. One is, हो सकता है प्राइसेस बढ़ रही हों, इसी वजह से people have to end up spending more amount of money, या फिर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा हो, or a combination of the two. Now remember one thing, when we're talking about expenditure निकालना है, तो कार्स का अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर निकालने जाता हूं, तो आई विल डू प्राइस इनटू क्वांटिटी. उससे पता लग जाएगा टोटल मुल्क में कितनी गाड़ियों की क्या वैल्यू वर्थ ऑफ गाड़ियां बिकी. सो सारी गाड़ी की प्राइस इनटू क्वांटिटी का सम करूंगा, सिग्मा सम. उसी तरीके से नॉट जस्ट फॉर कार्स, I might even do it for certain machines. किस प्राइस पे कितनी मशीनें बिकी, सम कर लिया. उसी तरह से मैंने रेस्टोरेंट्स के ऊपर जाके रिटेल्स देख लिए, रेस्टोरेंट्स के किस प्राइस के ऊपर कितनी क्वांटिटी बिकी, उसका सम कर लिया. यू अंडरस्टैंड दिस? सो जब ये मेरी जो टोटल वैल्यू होगी, वो प्राइस की वजह से भी ऊपर जा सकती है, क्वांटिटी की वजह से भी ऊपर जा सकती है. अगर प्राइस की वजह से ऊपर जा रही है तो दैट वुड बी लाइक एन इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम. अगर क्वांटिटी की वजह से ऊपर जा रही है तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट मीन्स पीपल कैन अफोर्ड मोर स्टफ. द लास्ट मेथड दैट वी हैव, which will give us the same numbers as the previous two methods of output and expenditure, is the total incomes. Everybody who is working, your government should have some sort of record of those people. They should be registered or paying in taxes or something or the other. तो वो हम total income method में जाके find out कर सकते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें basically you're adding together incomes earned for producing all the goods that year. Now remember, incomes are different from you getting free money. Free money is, I was unemployed, government came and they gave me unemployment benefit of let's say 5,000 rupees a month. The thing is, that's not an income, that's a benefit. इनकम वो चीज़ होती है जिसके बदले में मेरा कोई फैक्टर यूज़ हुआ है, मेरा वक्त, मेरी ज़मीन, मेरे नेचुरल रिसोर्सेज, मेरी मशीन. One of my factor is being used and I earn income on that. So free money is never included. So I'll mention
that only incomes earned for producing outputs are included. Okay, so therefore ये जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स बोलते हैं, जो फ्री मनी मिलता है आपको। ट्रांसफ़र पेमेंट्स such as pensions, even them, pensions and unemployment benefits are not included because no work was produced to earn those incomes. अच्छा, now when we say incomes, कौन कौन सी incomes are being added, तो basically the four factors of production के जो rewards होते हैं, mainly talking about those. So if you remember, your factors were land, labor, capital and the enterprise या entrepreneur. तो बेसिकली द रिवॉर्ड्स वर रेंट, आप सारा रेंट इंक्लूड कर रहे हो, सारी वेजेस एंड सैलरीज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आप सारा इंटरेस्ट पेमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हो एंड लास्टली आप सारा प्रॉफिट भी। एक गाड़ी की प्राइस अगर 30 लाख रुपए है तो उस 30 लाख का ब्रेकअप इस रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट पेमेंट और प्रॉफिट में ब्रेक डाउन हो सकता है।